गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये मैं वीडियो इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी सीइंग द कैम। ओके, नाउ दिस टाइम द एनालिसिस इज पॉसिबल बिकॉज द वेकेंसीज आर सेग्रीगेटेड वेरी। ओके, जनरली जो वेकेंसीज होते थे लास्ट टाइम फॉर इवन फॉर व्हाट इज ए अदर बैंक क्लर्क्स, तो द सेग्रीगेशन ऑफ वेकेंसीज आर नॉट प्रॉपर। लेकिन SBI क्लर्क में इस बार सेग्रीगेशन बहुत प्रॉपर हुआ है। दैट इज द रीजन आई कैन गेट द एनालिसिस, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। सो लेट्स सी, मैंने बहुत कुछ डेटा लिया एंड आई हैव ट्राइड टू एनालाइज। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट कट ऑफ, बट आई विल जस्ट गिव यू अ आइडिया दैट वेयर यू कैन कीप योर बेंचमार्क सो दैट आपको एक फेयर चांस होगा टू क्लियर द कट ऑफ। ओके, सो लेट्स सी। ओके, इट मे नॉट बी 100% accurate, but I am thinking that I am almost correct. Okay, so it is my analysis, purely my analysis. Okay, let's see. Now if I see the different states, okay, now if I talk about, let's say, Gujarat. So if I talk about Gujarat, I can say in 2022 the total vacancies were 353. Now which increased to 820, which means there was an increase of 133% in the number of vacancies. Later on, now in 2024, now the vacancies are increased by 30.8. Already vacancies ज़्यादा था, अभी और भी ज़्यादा हो गया। So because of this increase in the vacancy from 22 to 23, there was a dip in cutoff. मतलब cutoff थोड़ा लो गया था, which is a good sign for us, right? तो कितना कट ऑफ लो गया था? देयर वाज अ डिक्रीज इन 28% इन द कट ऑफ। ओके, तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इफ आई वांट टू कैलकुलेट इन दिस वे, सो आई कैन से अगर 133% ओके वैकेंसीज बढ़ा, देयर वाज अ डिक्रीज इन द कट ऑफ व्हिच इज 28.7. नाउ इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 31%, हाउ मच वुड बी द? ओके, आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग इट. Okay, other factors will take it into the consideration, but as of now this. Now when I do this, I would get x is almost equal to some 8%. तो इस बार मैं expect कर सकता हूँ that there is a dip of around 8% in the cutoff for गुजरात. गुजरात के लिए 8% शायद cutoff लो होगा. Okay, so if I what you say use that formula कि 8% अगर मैं कट करूँ तो मेरे को almost somewhere like 46.5 ऐसा कुछ आएगा, राइट? एंड इफ आई ऐड इन्फ्लेशन टू दैट, इन्फ्लेशन का मतलब कंपटीशन आई कैन से इन दिस रिगार्ड। तो कंपटीशन अगर बढ़ रहा है, हर साल कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़ता है। इफ आई से 3% कंपटीशन इज इंक्रीज, सो आई जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ ऑलमोस्ट 3%. सो आई कैन से गुजरात का कट ऑफ वुड बी अराउंड 48. गुजरात का कट ऑफ 48 रहेगा. दैट इज माई एस्टिमेशन. ओके, नाउ व्हेन आई एम एस्टिमेटिंग दैट इट इज 48, आई एम सेइंग दैट ये 48 से कम हो सकता है. इट कैन बी लेस देन 48, बट आई डोंट थिंक इट विल बी मोर देन 40. ओके, सो 48 is a benchmark which we can, okay, plus or minus 2-3 लगा लो just for the safe side, but according to me less than 48, not more than 40. Okay, so I just remove this one. At the end I will show the cutoff for every state. मैं सभी का करूँगा. Okay, I will show the cutoff, but I have not I will not show you in calculation here. Okay, सभी का calculation नहीं दिखाऊंगा, otherwise the video will be very long. Okay, some important places where मेरे को लगता है कि आपको analysis दिखाना चाहिए, I will show. Okay, now the second important state, okay, it is Andhra Pradesh. Now why it is important state this time is because यहाँ पे cutoff last time was 56.5 in 2023, where the vacancies were only 50. Okay, now when you see the cutoffs, 50s में cutoff is very less. Okay, 50s में बहुत कम cutoff जा रहे हैं, but in Andhra Pradesh, even though there are only 50 vacancies, but still cutoff was very less. Okay, now this time also I got 50 vacancies from इस बार भी 50 vacancies ही होगा. Okay, now what will happen? इस बार भी अगर 50 vacancies ही है, what are the other factors which I can consider is when I see the map. Okay, generally you have to understand कि South Indian don't prefer to go to North India. ये एक what you say, I can say that is how it happens. Okay, don't get offended about this, but ऐसा ही होता है. तो अगर आंध्रा वाले if they want to
go somewhere, what are the places where they would go? What are the places where they would prefer to go? Okay. शायद वो लोग कर्नाटका चले जाएंगे, तमिलनाडु चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे. Kerala would not be most preferable for Andhra people. So these are the three states where they can go. But this time what happened? This time Telangana, the number of vacancies are reduced. Okay. Karnataka, the number of vacancies are reduced. But Tamil Nadu, the number of vacancies are increased. okay. Now in that way I can say some of the people might go to Andhra. Some of the Andhra people might go to Tamil Nadu. लेकिन ये कर्नाटका एंड द तेलंगाना फैक्टर विच दे हैड अर्लियर, ओके, शायद वो फैक्टर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा. स्टिल तेलंगाना, इट्स नॉट दैट देयर इज अ ह्यूज डिप, थोड़ा बहुत डिप है. स्टिल पीपल वुड गो टू तेलंगाना, ओके, लेकिन ज़्यादा शायद नहीं जाएंगे. कर्नाटका नो चांस होता बिकॉज दिस टाइम वैकेंसीज आर वेरी, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन से देयर वुड बी अ स्लाइट इंक्रीज इन द कट ऑफ, डेफिनेटली अ स्लाइट इंक्रीज इन द कट ऑफ. तो वो कितना इंक्रीज होगा वो हम लोग एक बार देखते हैं. Okay, so according to me, there will be 5%, not more than that. There will be 5% increase in the cutoff. I am taking the competition also into consideration. Now, why am I saying 5%? See, when the what we say vacancies are very high, okay, you should feel very happy. Even though your state has not got more number of vacancies, the rule is very simple. अगर vacancies ज़्यादा है, okay, for the other states, the rule is those states would not come to your place. वो लोग अब नहीं आएंगे, they are self sufficient. Okay, जो लोग पहले आपके states में आते थे, those people would not come because they are self sufficient. Now because of that, your state, okay, some of the people might go to other states because the vacancies are high. So you should be happy कि अगर दूसरे जगह vacancies बढ़ रहे हैं, okay, that means it is good for you. Okay, it is definitely a good sign. In that way, I will say there will not be more than 5% increase in the cutoff. So I am thinking, or I am estimating, okay, so there is 5% increase, okay, so it would almost come to some 59. तो आंध्रा का जो कट ऑफ रहेगा इस बार, okay, according to my estimation it would be 50. Okay, later on I will show you the whole Excel sheet जहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो. Maybe I will pin this particular one or put a link in the description, okay. So Andhra का हो गया. Let's say for the next one, Karnataka. Karnataka is an important state here because 450 vacancies were there. Now it became 50 vacancies. Okay, 450 vacancies were there. Now it became 50 vacancies. Now you would say there will be so much increase in the country. Okay, पहले ये भी देख लेते हैं. There were 316 vacancies in 2022. Cutoff was 64.5. Now the vacancies increased by 42%, cutoff decreased by some 13%. Okay, so there was a fair increase and decrease in the cutoff. लेकिन जो इस बार जो dip आया है, okay, there is almost a dip of around 90% of the vacancy. Now you may think that ये cutoff 56 से शायद 76 चले जाए. Okay, that could be the thing कि एक 30% शायद cutoff will increase. But here the catch is, here you should always say that Karnataka is a targeted place for what you say other states. क्योंकि if you consider the last year vacancies were very high. Okay, last year the vacancies are very high. Now what would have happened to Karnataka is when the vacancies are very high in Karnataka, okay, Andhra का तो last time भी कम था. Okay, it was 50. Everyone from Andhra, especially this belt, okay, most of the people would have gone there. Okay, now most of the Kerala people might have also gone here. Tamil Nadu के भी लोग गए होंगे. So Karnataka is one place where you can target because cut off थोड़ा बहुत low जाता है. Okay, so in that way most of the people must have targeted Karnataka. लेकिन इस बार nobody will come because the vacancies are less. Now where will this Karnataka people go? This Karnataka people can also go to Maharashtra क्योंकि उनके लिए वो थोड़ा पास पड़ेगा. Maharashtra vacancies are very high. They may go to Telangana because vacancies are decent. If not very high, they are decent. लोग तमिलनाडु भी जा सकते हैं. तमिलनाडु because it's a bumper vacancy space. Okay, so बहुत सारे options हैं. People coming would stop and people going would increase. Okay, ये बहुत अच्छा sign है. So definitely Karnataka, the vacancy will not be, the cutoff will not be very high,
but it will definitely increase. I am saying there would be an increase of around 15%. एक 15% का आपको what you say increase दिख सकता है. So I am estimating it to be 56 into 1.15, which is 15% अगर increase आप लोग देखो, so around 65 would be the cutoff. Okay, this would be the cutoff का Karnataka. Okay, let's see other states very quickly now. हम लोग देखते हैं. Now Madhya Pradesh, if you see, there is an increase of, okay, there is an increase of what you say 357% of vacancies. Okay, मतलब double triple almost 3.5 times vacancies बढ़ गया. Okay, so which is a very good sign. और मध्य प्रदेश अगर आप कंसिडर कर रहे हो, see last time there were 288 vacancies in Madhya Pradesh and only 212 vacancies in Chandigarh. वो दोनों बगल बगल में आए. Okay, so most of the people would prefer to go to Chandigarh and Chandigarh people would prefer to go to Madhya Pradesh. तो इन दोनों का वो चलेगा. Now because there are more vacancies, we would have thought कि the cutoff would be low. लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ का cutoff was lower than मध्य प्रदेश. People must have thought कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे अप्लाई कर दे. Okay, most of the people must have done that. लेकिन इस बार the advantage is even Chandigarh has got good vacancies. Okay, चंडीगढ़ का वैकेंसी बढ़ा है. It has almost what you say double. Okay, double हुआ है, 1.25 times हो गया. And Madhya Pradesh also the vacancies have increased. So I can definitely say this time no one will go from Chandigarh to Madhya Pradesh until and unless it is very necessary. Okay, and no one from Madhya Pradesh would come to Chandigarh. Okay, so that you can see, and that is the biggest advantage for Madhya Pradesh this time. Madhya Pradesh के लिए वो सबसे बड़ा advantage है that people from Chandigarh would not go to Madhya Pradesh. Okay, so in that way, if I estimate what we say the cutoff for Madhya Pradesh. Let's see Madhya Pradesh का cutoff if I can just estimate. So it will be around 50. Okay, so वो calculation मैंने लिखा नहीं है on whatever factors I have decided that मैंने factors से वो डाला है वो मैंने इसमें लिखा नहीं है. So I don't have that data right now. तो ये 53 cutoff मैं estimate कर रहा हूँ and the cutoff for Chandigarh would be very less. 48 तक होगा. So Chandigarh would be one place where people can target, but I don't think people would target any other state this time because the vacancies are segregated so. Okay, बहुत कम ऐसे स्टेट वाले बंदे होंगे जो दूसरे जगह जाना चाहेंगे, which is a very good sign. Okay, so these two are the cutoff for the states. Okay. So the next one, I missed this one. So Madhya Pradesh, if I talk about cutoff, मेरे पास calculation है वैसे. So 67.5. Okay, I am estimating that there will be a dip of around 25%. 25% तक का cutoff कम होगा, and definitely because of the competition, a 3% cutoff increase. Okay, so in that way I can say overall it is equal to 50. Okay, this is the point. Next one, if I talk about Haryana, okay, not Haryana, Himachal Pradesh. Okay, now you can see Himachal Pradesh last time the cutoff is 180 and this time the cutoff is 170. Thus numbers का what you say 10 vacancies are less. Okay, but because of that will there be any difference in the cutoff? I don't think there will be any difference in the cutoff. ये 64 है, इस बार भी 64 ही होगा. Okay, even though the competition increases every year, whatever it is, but this time also, even though there is a dip in vacancies, शायद 64 ही cut off होगा. Because of what reasons I can give this. अगर मैं हिमाचल प्रदेश देखूँ, okay, if I see Himachal Pradesh, this time Jammu also have got good vacancies. Uttarakhand has got good vacancies. पंजाब में अच्छे vacancies आए हैं. Okay, Haryana में also it is quite good, and no one would come from Haryana to Himachal Pradesh. Rather, they would prefer somewhere very near. Okay, so in that way, I don't think what you say the cutoff will go high here. Okay, because many people would not come, and the people from Himachal Pradesh might go to Punjab.
ओके, बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो पंजाब चले जाएंगे. So because of that reason, I am calculating that it is going to be the same. Okay. तो आई विल जस्ट वाइंड इट अप. एक 2-3 हम लोग करेंगे और उसके बाद जस्ट वाइंड इट अप. नाउ व्हाट कुड बी द लीस्ट कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे जाएगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेशन द लीस्ट कट ऑफ, वन ऑफ देम वुड बी वेस्ट बंगाल. ओके, वन ऑफ द लीस्ट कट ऑफ वाला जो स्टेट होगा वो वेस्ट बंगाल होगा. ओके, if you see there is an increase of 1000% vacancies. Okay, West Bengal में 114 vacancies था, now it is 1254. Okay, 1000% vacancies increase हुआ. Now because of that ये मतलब what you say, the cutoff will be significantly low because the competition is also less. Okay, why the competition is less? क्योंकि अगर मैं वेस्ट बंगाल को देखूँ, okay, if I am talking about what you say West Bengal, so West Bengal can have a competition from Jharkhand, Bihar, okay, and Odisha. Okay, but Jharkhand is self-sufficient क्योंकि बहुत सारे vacancies. Bihar too many vacancies. Okay, उनका भी एक record हो गया. Odisha is also decent enough. It's not very bad at all. Okay, so I don't think there is going to be much what you say competition at all. कोई और कहीं से आने के लिए मोस्टली नहीं आएगा. मे बी 3% बिकॉज ऑफ दैट कट ऑफ वुड इंक्रीज वॉट एवर इट इज. बट आई कैन से इफ आई हैव टू कैलकुलेट द कट ऑफ, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द कट ऑफ फॉर वेस्ट बंगाल, सो आई वुड से 80 into 0.55 which is 45% कट ऑफ वुड एक्चुअली डिक्रीज. ओके, तो ऑलमोस्ट 44 होगा ये. ओके, इनटू मैं एक कंपटीशन भी ऐड कर लेता हूँ, सो इट विल बी ऑलमोस्ट 45. दिस इज गोइंग टू बी द कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर वेस्ट बंगाल दिस टाइम. दिस वुड बी वन ऑफ द स्टेट्स वेयर इट इज अ वेरी लो कट. ओके, सो व्हाट वुड बी द अदर स्टेट वेयर देयर इज अ वेरी लो कट ऑफ, हम लोग ये बात देख लेते हैं. सो गुजरात इट इज 48. ओके, गुजरात में 48 होगा कट ऑफ विच इज़ लो. छत्तीसगढ़ में 48 हो सकता है. ओके, विच इज़ लो. एंड वेस्ट बंगाल द कट ऑफ वुड बी वेरी लो. एंड इवन अरुणाचल प्रदेश. ओके, अरुणाचल प्रदेश इज़ अ वेरी अंडररेटेड स्टेट. ओके, इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ इस बार वो बहुत लो जाएगा कट ऑफ. सो I have done my calculation. मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ. एंड द लीस्ट कट ऑफ, ओके, फॉर दिस ईयर अकॉर्डिंग टू मी वुड बी बिहार. ओके, बिहार सबसे लीस्ट कट ऑफ होगा मेरे हिसाब से. ओके, सो दिस इज गोइंग टू हियर इट इज गोइंग टू बी द लीस्ट कट ऑफ. वन रीजन फॉर दैट इज बिहार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं. ओके, पहले व्हाट यू से अर्लियर other states might have come to Bihar क्योंकि थोड़े vacancies ज़्यादा है. but this time all the surrounding states, okay, have got the great vacancy. तो इस हिसाब से तो बिहार I don't think it is going to be very high cut off. ये 42 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद इससे भी थोड़ा लो हो सकता है. ओके, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल अप्लाइंग इन बिहार. ओके, एंड झारखंड इट इज़ 47. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ मोस्ट ऑफ मैंने कुछ states का vacancies I have not estimated because there was no data which I had. But if you feel that आपको वो चाहिए, okay, I can do little bit of research. अगर आपको वो states का cut off चाहिए, okay, you just mention it in comment section that आपको चाहिए. Okay, then I can think about it. Okay, मैं एक बार थोड़ा बहुत research कर सकता हूँ. Let's see how it goes first. Alright. Now, what is the other thing? Now, what is the suggestion that I will give you? Now, for this clerk, what you say, vacancies, or I would say applying for this states, I would suggest that if your hometown has got enough number of vacancies, just go with that. Okay, just because I am saying that here the cutoff would be low, this and all, this depends on so many factors. Though I have considered all the factors which I could. Okay, ऐसा कोई factor हो सकता है which would completely change the game. Okay, this is the base through which you can
पुट अ बेंचमार्क कि आपको इतना लाना है, उससे एक 10 मार्क ज़्यादा लाने के लिए ट्राई करो. ओके, बट इफ़ योर स्टेट हैज़ गॉट इनफ वैकेंसीज एंड यू फील दैट यू कैन क्लियर इट, आप दूसरे स्टेट्स में मत जाओ. ओके, और अगर आपको लगता है डेफिनेटली आपको जॉब आना है, wherever it is, you can definitely apply in different states. Okay, and other people need not worry about it क्योंकि that percentage will be very less. ऐसा नहीं कि सब लोग आ जाएंगे, एक 5% आएंगे, शायद आपका कट ऑफ 2% बढ़ सकता है. ओके, मोर देन दैट तो कुछ नहीं है. ओके, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इन योर स्टेट्स ओनली मोस्टली. और अगर नहीं भी कर रहे हो तो विद इन 3 years यू वुड बिकम प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड देन यू कैन गो टू एनी स्टेट और द असाइंड स्टेट आप लोग जा सकते. ओके, नाउ the next video which I am going to make for you is the video which is based on GA. Okay, जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ. ओके, now most of the people have problem in general what you say general analysis or not general awareness. Okay, most of the people have the problem in that क्योंकि कॉन्स लॉजिकल वर्बल तो क्लियर हो जाए. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस मोस्ट ऑफ द पीपल सी दैट दे आर जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ. वो भी कभी कभी हो नहीं पाता. बिकॉज ऑफ दैट बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाए. ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस टाइप इज मैं आपको एक अच्छा सा एक जैसे स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूँ, एनालिसिस बताने वाला हूँ, थ्रू विच यू कैन डेफिनेटली गेट 15 to 20 marks out of 40. Okay, this would help you to clear the exam also and get decent score also. I am not promising that you will get 40 out of 40. ये मत बोलना. Okay, 40 out of 40 तो नहीं हो सकता. Okay, with analysis, with limited what you say preparation. Okay, I would say that you can get 15 to 20 marks. Okay, now GA the problem is बहुत सारे नाम होते हैं. there are too many names which you have to remember. If you are good in that, that is okay. Okay, now we might not have dealt with so many names. Okay, इतने सारे names को हम लोगों ने बचपन से dealt नहीं किया होगा तो हमें याद कैसे रहेगा. It is not very easy for us to remember. Okay, there are so many techniques जो लोग बोलते हैं लेकिन वो techniques एक टाइम आने के बाद वो वर्कआउट नहीं होता. Okay, so what is the way to actually learn GA so that you get at least 15 to 20. This is for people who are not able to clear GA. जो GA में बहुत अच्छे हैं मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा. जो GA में बहुत ख़राब है, यू वांट टू डू मिनिमम प्रिपरेशन बट वांट टू गेट अराउंड 20 मार्क्स. ओके, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आऊँ. ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन GA. ओके, आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड प्रिपरेशन करने का ज़रूरत है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GA. Okay, and after that we will talk about cons, logical and verb. Okay, वो एक one by one हम लोग करने के लिए ट्राई करेंगे. So thank you so much guys. We'll meet in the next video.